Good morning. Today we have a RBI meet. Yesterday, Fed Chairman Mr. Powell signals further rate hike due to strong labor market, which is slightly negative for emerging market. But now I think now the rate hike will be behind us. Small hikes only will be there. Very good results from Thermax, Bharti Airtel. Bharti Airtel revenue was higher, but now there was slight disappointment in the profit after tax due to some provisions. GNFC, GSFC, Wonderla, Mrs. Bector's Food, RCF, Phoenix Mill. These are very good stocks. So we will look into everything. SBI Life and ICICI Pru, January new business premium now were higher. So SBI Life was the best. So I think after correction, SBI Life is something to watch out for. And finance minister, all these life insurance companies have met the finance minister. So they are asking for a rollback for insurance above 5 lakh. I think that is a bit difficult, but even if it doesn't come, SBI Life will not have an impact. Less than 2% of the business comes from that category. It will not have a material impact. Even without that, SBI Life will have a very good growth. Even ICICI Pru. Deepak Nitrite, there is a second fire incident in last 10 months. So, and one more news, phenol spread in China has come down. This will impact Q4 results. IRB Infra and Private Invetam report 36% increase in toll collection for January 23. It is at 374 crores versus 276 crores. In Business Standard, I read an article which says that NTPC is to set up. Now they are looking to set up an energy park in Ankapalli in Andhra Pradesh to produce green energy, green ammonia and green methanol at a cost of 1,10,000 crores. It will be in two phases. Phase 1 will be completed in 2027, which is almost 4 years from now. And phase 2 will be completed in 2032. Barbecue Nation came with the results. Their revenue was higher by 14.5% at 328 crores. EBITDA margin at 19.2%. Profit after tax is 7.2%. Slight disappointment. But dine-in was 86.1%. Till you cannot do delivery business, I think it is slightly weak for Barbecue Nation. Barbecue Nation opened 10 new restaurants, closed 3 restaurants. Total, they have 212 restaurants. Kalyan Jewellers came with the results. Their revenue was higher by 13% at 3,884 crores. But we need to understand when gold prices go up, that also leads to higher revenue, but it will not be on tonnage basis. So profit after tax was higher by 9.6% at 148 crores. Company added 6 new showrooms, and these 2 new showrooms are away from the traditional South market for Kalyan Jewellers. They have 169 store count now. RCF came with the results. RCF revenue was higher by 68%. EBITDA margin at 7%. Revenue was at 6,325 crores. Profit after tax was 71% higher at 245 crores. And the quarter EPS was 4.44 rupees. And 9 months EPS was 14.62 rupees. And very important, the industrial chemical division, they continue to do good. That is why RCF is able to post very good results. Bharti Airtel revenue was almost higher by 19.9% at 35,804 crores. ARPU has improved from 163 rupees to 193 rupees. Company operates in 16 countries and has a total subscriber base of 51 crores.
Indian revenue was higher by 19.4%. In India, they have 36.9 crore. They are planning for a capex of 8,095 crores. Profit after tax was 1,588. Now it was higher by 91%. Sequentially, it has come down. That is where the problem is there. But we need to understand it has become a two player. So any correction would be an opportunity to buy. The total net debt Bharti Airtel has is 2,09,731 crores. Now, so that is something, huge debt they have, and still they need to spend on capex. Phoenix Mill consolidated revenue was 683 crores, 60% higher. Profit after tax was higher by 78% at 176. So their 9 months EPS is 60.53. I think they have come out very well after this COVID. So this is one stock to watch. Wonderla is one more stock we need to watch out for. They have done very good, even compared to pre-COVID level. Their footfall has been very high. Now they have had 9 lakh footfall. They have 3 units, one in Bangalore, Kochi, Hyderabad. All did well is what company notification is saying. The revenue was at 113 crores, which is higher by 2.35 times, but it is not a comparable due to COVID. Profit after tax is 38 crores. So the EPS for the quarter was 6 rupees 89 paisa, and 9 months EPS is 20 rupees 13 paisa. And they said it is highest EPS since inspection. Since the start of the company. Bhubaneswar, Odisha would open in 2025. That is what the company is saying. Even Thermax result revenue was higher by 27% at 2,049 crores. EBITDA margin 7.86%. Profit after tax higher by 59% at 126 crore. Total order book is 9,859 crores, and we need to understand, Thermax has an expertise in gray hydrogen, so they are working on green hydrogen already. Hydrogen process is same, so there are chances that with so many companies announcing project, Thermax, Cummins are few companies which will benefit from green hydrogen and green ammonia and whatever other things companies are doing. Rastamji came with the results. Now, real estate cannot be compared quarter-on-quarter basis, so or year-on-year basis also. So there is a disappointment in their results, but they are low debt company, but their sales is very good. BSE came with the results. The total income was higher by 12.3% at 245 crores. Profit after tax for 47 crores. EBITDA margin at 19%. So not a great result for the pricing. It is these are annuity business. So any good correction from here only I will look into it. Now it is a avoid from my side. CAMS also came with the results. So 243 crores is the revenue, 2.5%. EBITDA margin 45.4%. Profit after tax 73 crores, 2.2% higher. Dividend of 10 rupees 50 paisa. Still not a great results. 2% growth for which we cannot pay a very heavy premium. Gujarat Alkali board has approved Vision 10,000 crore revenue by 2028. Now this vision is very good, and they have done a lot of expansion in that thing. But they said it is in discussion stage, and they will come out with the plan very soon, and they will inform the exchanges regarding that. Revenue was higher by 4% at 1,122 crores. EBITDA margin at 24%. Profit after tax was down 57% at 87.2 crores. So their RM cost has impacted. So EPS was 11 rupee 87 paisa, whereas 9-month EPS is 46. The stock is rightly valued at current level, but their expanded capacity has to come on stream.
but in Gujarat Alkali, the standalone results are very good. Now, their joint venture, along with Nalco, they are producing few chemicals where it is in a trial stage. That unit is making loss. That is impacting the revenue, console profit after tax. GSFC came with the results, fantastic results. Revenue was higher by 30.54% at 3,478 crores. Profit after tax higher by 66% at 409 crores. Now their EPS for this quarter alone was 10 rupees 28 paisa, and 9 months EPS is 26, and company's capex for 4,000 crores. Now it includes phosphoric acid, sulfuric acid at Sikka, and urea plant and ammonia sulfate plant. So many expansion is there. GSFC is also a very good result. With that, over to you, Shritija. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ब्रेकआउट को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। आज आरबीआई की मीटिंग है, कल फेड की मीटिंग हुई थी, उसमें तो फर्दर रेट हाइक की बात हुई थी, तो उसमें स्लाइडली थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है बारबेक्यू के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू हायर्स आया था। देन उसके अलावा ये स्टॉक्स है जीएनएफसी, आरसीएफ, फिनिक्स मिल, बैक्टर फूड, ये स्टॉक्स हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, तो ये स्टॉक के आप ऊपर ध्यान दे सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में एसबीआई लाइफ जो है, जो बजट के बाद 5 लाख के ऊपर टैक्स होगा, ये अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक्स बहुत करेक्ट हुए, तो ये स्टॉक को आप देख सकते हो। एसबीआई लाइफ का ये कैटेगरी में इतना लेस देन 2% का बिजनेस है, तो एसबीआई लाइफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये स्टॉक्स को आप वॉच आउट कर सकते हो, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। देन दीपक नाइट्रेट जो कंपनी है, उसमें सेकेंड टाइम फायर इंसिडेंट हुआ है लास्ट 10 मंथ्स में। देन नेक्स्ट अपडेट है आरबी इंफ्रा जो कंपनी है, उसमें 36% टोल कलेक्शन हुआ है जैन 23 में। देन नेक्स्ट अपडेट है एनटीपीसी जो कंपनी है, वो सेटअप करने वाली है एनर्जी पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में, जो ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड होगा, उसमें ग्रीन अमोनिया, और ये जो है वो 2 फेजेस में होगा। जो फर्स्ट फेज होगी वो 2027 तक हो जाएगी, और सेकेंड फेज है वो 2032 तक हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू जो था वो 13% से इंक्रीज होके 3,884 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी 6 न्यू शोरूम्स ऐड करने वाली है जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन बेस्ड रहेंगे। पैट 9.6% से हायर होके 148 करोड़ रिपोर्ट किया है। अभी टोटल स्टोर्स काउंट है कंपनी के पास 169। बारबेक्यू के नंबर्स आए थे, पैट 7.2% है। नंबर्स जो थे इतने काफी अच्छे नहीं थे। उनका जो डाइनिंग बिजनेस है वो 86% है। कंपनी 10 न्यू रेस्टोरेंट्स ऐड करने वाली है। अभी टोटल काउंट जो है रेस्टोरेंट का वो 212 है। आरसीएफ के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू 68% से हायर होके कंपनी ने 6,325 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन 7% से इंक्रीज हुआ है। पैट 71% से इंक्रीज होके 245 करोड़ रिपोर्ट किया है। ये क्वार्टर का ईपीएस 4 रुपीज 44 पैसा है, और 9 मंथ का ईपीएस है वो 14 रुपीज 62 पैसा है। कंपनी का जो इंडस्ट्रियल केमिकल डिवीजन है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके कारण इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिजल्ट पे देखा गया और रिजल्ट अच्छा है। देन भारतीय एयरटेल के जो नंबर्स है वो नंबर्स काफी अच्छा है, तो उसमें जो रेवेन्यू है वो 99.9% आया है, और आरपू है वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है, 163 से लेके 189 के अराउंड कुछ है। देन उनका जो अभी कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है 16 कंट्रीज में। इंडियन रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। उनका कैपेक्स प्लान है कुछ अराउंड 8,095 करोड़ का। जो कंपनी का पैट है वो सिक्वेंशनली कम डाउन आया है, तो ये थोड़ा कंसर्न है, बट ओवरऑल ये सेगमेंट में 2 ही प्लेयर्स है, और कंपनी का अभी जो नेट डेब्ट है वो 2,09,731 करोड़ के अराउंड कुछ है। करेक्शन आने के बाद ये स्टॉक को अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। फिनिक्स मिल के नंबर्स आए थे, पैट जो है वो 78% से इंक्रीज होके 176 करोड़ रिपोर्ट किया है। 9 मंथ का ईपीएस है 16.53 पैसा। ये स्टॉक भी वॉच आउट करने जैसा है। वंडरला की भी नंबर्स काफी अच्छा है। उनका जो फुटफॉल है वो काफी हायर है, कुछ अराउंड 9 लाख के अराउंड है।
कंपनी के 3 यूनिट है बैंगलोर, कोचीन और हैदराबाद में। उनका रेवेन्यू भी हायर आया है। पैट 38 करोड़ रिपोर्ट किया है। ईपीएस है 6.89 पैसा। 9 मंथ का ईपीएस है 20 रुपीज 30 पैसा। अभी तक का हाईएस्ट ईपीएस है जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से। और कंपनी का प्लान है कि वो उनका और 2 यूनिट भुवनेश्वर और उड़ीसा में स्टार्ट करेंगे 2025 तक। नेक्स्ट अपडेट है रिस्तम जी के भी नंबर्स आए थे रियलिटी सेक्टर में। नंबर्स इतने काफी अच्छे नहीं आए थे, बट ये लो डेप्थ कंपनी है। देन बीएससी के भी नंबर्स आए थे। बीएससी के जो नंबर्स में टोटल इनकम है 12% से हायर आया है, बट पैट जो है 47 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन 19% से रिपोर्ट किया है। नंबर्स इतने काफी अच्छे नहीं आए थे। और अभी यहाँ से करेक्शन हम लोग देख सकते हैं, तो अभी के लिए बीएससी हम लोग अवॉइड का आउटलुक है। नेक्स्ट अपडेट है कैम्स के भी नंबर्स आए थे। कैम्स का जो रेवेन्यू है वो 2% से इंक्रीज होकर 243 करोड़ है। इबिटा मार्जिन भी हायर है, बट पैट जो है 73 करोड़ है, जो 2.2% हायर है। कंपनी ने 10.5 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कैम्स के भी नंबर्स ओके ओके आए थे। गुजरात अल्कली ने भी नंबर रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 4% से इंक्रीज होके 11,122 करोड़ का रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन 24% से हायर आया है। पैट जो है वो 57% की डाउन देखा गया। 87.2 करोड़ रिपोर्ट किया है। ईपीएस जो है वो अगले क्वार्टर का 11 रुपीज 87 पैसा है और 9 मंथ का ईपीएस कुछ अराउंड 46 रुपीज के राउंड है। कंपनी का जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है वो काफी अच्छा है, बट उनके जो बाकी जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं उसमें कारण ग्रोथ नहीं देखी गई, तो इसका इम्पैक्ट कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे हम लोगों ने देखा गया। जीएसएफसी के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स काफी अच्छे आए थे। रेवेन्यू जो है वो 3,478 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। पैट 66% से इंक्रीज होकर 409 करोड़ का रिपोर्ट किया है। ईपीएस जो है वो ये क्वार्टर का 10 रुपीज 28 पैसा है और 9 मंथ का ईपीएस कुछ अराउंड 26 रुपीज है। और कंपनी का कैपेक्स का प्लान है 4,000 करोड़ का। उसमें फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया सल्फेट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन का प्लान है। देन थर्मैक्स के नंबर्स आए थे। कंपनी ने 59% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की। प्रॉफिट जो है वो 126.2 करोड़ का रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 27% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई और 49 करोड़ का रिपोर्ट किया है। देन नेक्स्ट अपडेट है एस्ट्रल के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स इनलाइन आए थे रेवेन्यू फ्रंट पे। इबिटा मार्जिन एस्टिमेट से 21% से इंक्रीज हुआ है। पैट है वो 17% से इंक्रीज हुआ है एस्टिमेट से। सेल्स ग्रो हुआ है 15% ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल नंबर्स में पैट में डिक्लाइन देखी गई 25% ईयर ऑन ईयर और 952 मिलियन रिपोर्ट किया है। कंपनी का कॉन कॉल होने के बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे। करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है। प्रिंस पाइप के भी नंबर्स आए थे। नंबर्स में एस्टिमेट जो है उससे इनलाइन ही नंबर्स आए थे। इबिटा मार्जिन अभी 10% से डाउन है, जो 689 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट किया है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो 354 मिलियन है, जो डाउन है 47% से। कंपनी का जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो इम्प्रूव हुआ है 44 डेज से। दिसंबर 2020 से हम लोग करें तो जो प्रीवियसली 68 डेज था सितंबर 2022 में। देन नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटो के भी नंबर्स आए थे। नेट सेल्स है वो अभी 18 बिलियन है, जो हमारे एस्टिमेट से इनलाइन ही आया है। रेवेन्यू फॉल हुआ है 12% से, क्योंकि वॉल्यूम में फॉल देखा गया उसके कारण। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है 7 बिलियन। देन करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 2997 लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। कंपनी का कॉन कॉल है आज, उसके बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे। सोमानी सिरामिक्स के नंबर्स आए थे। नंबर्स बिलो हमारे एस्टिमेट से आए हैं। नेट सेल इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर 6.5% से। वॉल्यूम है वो 3.7% है ईयर ऑन ईयर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 में वो टाइल्स का 87 है और सैनिटरी का 67 है और फॉसेट्स का 62% है। ओवरऑल हम लोग कॉन कॉल होने के बाद पोस्ट मतलब रिलीज नोट करेंगे। अंबुजा सीमेंट के भी नंबर्स जो है वो इनलाइन ही आए थे। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 7% ईयर ऑन ईयर। इबिटा में इंप्रूवमेंट देखी गई है, जो पहले था 431 अभी 813 है। नेक्स्ट अपडेट है सेंचुरी प्लाईवुड के नंबर्स आए थे। हमारे एस्टिमेट से नंबर जो है स्लाइटली वीकर आया है। इबिटा जो है हायर आया है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 3.4% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% का डाउन देखा गया है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है 14% ईयर ऑन ईयर। देन
कॉन्फ्रेंस कॉल कल है, उसके बाद हम लोग डिटेल नोट रिलीज करेंगे। लास्ट अपडेट है पीवीआर और आइनॉक्स के ऊपर। पीवीआर और आइनॉक्स का जो मर्जर है उसका रिकॉर्ड डेट आ गया है, फरवरी 17 है। तो इसके बाद मर्ज होने के बाद कंपनी पीवीआर आइनॉक्स से नाम से जानी जाएगी और ये लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी होगी। कंपनी ने बोला है कि नियरली उनके पास 1625 स्क्रीन है और उन कंपनी का प्लान है कि वो नेक्स्ट 5 years में 3000 स्क्रीन ऐड करने का प्लान है। Technical and derivatives outlook. With Nifty, yesterday we saw that Nifty was down by 43 points. This was again the second consecutive trading session where we have seen the sideways move. Even though when there was a dip, the buying was seen in the last closing hour. So we believe that Nifty is trading in the range of this 17,500 to 17,800 level. So this on the way up, whenever this Nifty climbs above 17,800, then we feel there will be some amount of positive momentum, which will take the Nifty towards 18,000 level. And a weekly close above 18,000 will open up for further upside. We are positive on the market, even though when there is a sideways consolidation, there is very limited downside. Whatever the fall is seen, it has been bought, it is bought back. So I believe the lower levels, the buying will come in, and we need a breakout. The immediate trigger is 17,800 on a cash level. So above that, the positive momentum will be seen on the higher side. Coming to the Bank Nifty, when the Nifty was down in yesterday's session, Bank Nifty has closed up by 116 points. And it was the day's low was seen at 41,095. There was a sharp recovery in the Bank Nifty, and even in the derivatives data, we are seeing a short covering in yesterday's session. So I believe that Bank Nifty, even today, the RBI meet is there. The trigger for the Bank Nifty is 41,800. So above 41,800, even the Bank Nifty should trade positive. Above 41,800, the Bank Nifty can go up to 42,500, 43,000 in a near term. So bias for both the indices is positive. Lower levels, we should be keeping a watch at the stock specific buy. Coming to derivatives data, there was a short uh, position, short built up in Nifty future to the tune of 2.31%, which was an increase in OI by 2.76 million share. The PCR in the Nifty futures has declined from 0.96 to 0.81 ratio, which is slightly negative. The major additions were seen in the 17,800 call option by 38.95 lakh shares and 18,000 call options by 25.39 lakh shares. So this is the resistance. On the put front, 17,400 put by 14.55 lakh shares and 17,500 put by 9.98 lakh shares. So this should be the support. Bank Nifty has seen a short covering to the tune of minus 2.77% and a decline of minus 77,000 shares. The PCR has gained from 0.89 to 0.95 ratio, which is positive. The major additions were seen in 41,500 put option at 3.49 lakh shares and 41,000 put option. Then on the call front, 41,800 call option, which is the resistance. So this would be the levels. Coming to the FI data, so FIs were marginally they did went long by 700 contracts in the index future. So net is still short by 110,000 contracts in the overall index future. The long short ratio is currently at 15.90%, which is at the lower side. Few stocks which are looking positive on charts are Tata Chemical, IndusInd Bank, Axis Bank are looking positive. Indian hotels are looking positive. Mahindra CI is looking positive. As of yesterday, we only saw weakness in the metal sector. Rest, everything looks good on chart. So maybe on a bounce, banking would be the one which would lead the rally. So we are very strongly have a positive bounce in the Bank Nifty. So that's all from my end. I'll hand over to Bhavesh for more research updates. Thank you. Hi, good morning, team. So, starting with results, three building material companies reported results: Astral, Prince, and Somani. So, Astral and Prince were in line with our expectation, but Somani was disappointing. So, Astral's sales was higher by 15% and on a YOY basis to nearly 1267 crores, and even net, but EBITDA declined by 6% YOY. So, margin pressure for Astral continued, and we have a call today. Post that, we'll update further.
Second, Prince Pipes reported results which were in line with our expectations. Revenue was up 2.3% YOY, but EBITDA margin were strong and hence EBITDA was up by 23% YOY. So this is contradictory to what Astral has reported, where there was margin pressure, but Prince seems to have done well on that front. Thirdly, on Somani. So Somani sales, EBITDA, PAT, all of them declined by 8%, 22%, and 51%. So this is quite weak results. And EBITDA margin were down by 128 basis points on a YOY basis, and margin stood at only 7%. So weak results. Then on Hero MotoCorp, net sales fell by 12% YOY to 8,000 crores. All of it was led by nearly volume growth, which was lower by 13%. So EBITDA was in line with street expectation, nearly at 920 crores, and overall margin was lower only by 40 basis points, which is mainly because of input prices going up in the last 1.5 years. Then on Ambuja, so Ambuja results EBITDA was in line with R and street expectations, and volume growth was 7%. So again, that is what street expected. But EBITDA margin improvement was very sharp to 15% or rupees 813 rupees per ton. So this is very good. OPEX was lower by 4% QOQ, so that was controlled, and hence EBITDA improved to 813. In the September quarter, it was 431. Then on Century Ply, so Century Ply mixed results, revenue growth of 3.4% YOY to 877 crores. EBITDA margin expansion was a positive, 300 basis points higher QOQ to 14.5%. So that is positive, but sales growth was weak, so that is little concerning. We have a call today, and post that we'll update on further. And lastly, PVR and Inox has fixed February 17th as the record date for amalgamation between both these players. Post the merged entity will be called PVR Inox, and it will be India's largest film distribution company. And they will have a chain of nearly 1625 screens over 350 properties, and they have a plan to expand to 3,000 screens in the coming 5 years.